Hi Deep. So guys, we have Deep Chakraborty with us, who has been a very dear friend, but I have always admired him for his marketing skills. So hi Deep. Thank you for coming to the show. Shivanshu, first of all, very, very congratulations on this podcast and thank you for inviting me. So you were one of the first few people, literally I'm not kidding. दो तीन लोग जो होते हैं ना, चार पांच लोग, जो मेरे मेरे दिमाग में था कि कभी भी मैंने पॉडकास्ट स्टार्ट किया ना तो इन लोगों को तो बुलाना है, ठीक है. एंड ही वुड रिलेट टू मी. आई टेल यू स्टोरी गाइज, उसके बाद में आएंगे स्टोरी पे. एंड वो स्टोरी से ही डिफाइन हुआ है कि वाई दीप वाज द पर्सन जो आना ही था उनको शो पे. तो या दीप, आई टेल यू अ स्टोरी. क्योंकि मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि Deep used to be a very, very popular person in the community. So कुछ भी होता ना मार्केटिंग से रिलेटेड, पीपल यूज्ड टू गो लाइक इस बंदे के पास जाओ, इस बंदे के पास जाओ, ठीक है. सो आई वाज काइंड ऑफ लर्निंग थिंग्स, ठीक है. एंड आई वाज लाइक इस बंदे से सीखना है मेरे को. तो रात के 2 बज रहे थे, मैंने दीप को एक डीएम किया कि हे ब्रो, वुड यू बी, ऐसे कि मेरे को ये बता दो. एंड ही वाज काइंड इनफ, एंड अगले दिन उसने उन्होंने मेरे को कॉल बोला कि कॉल कर लो. एंड वी हैड अ टॉक, राइट. एंड उसके बाद से ही गाइडेड मी, एंड काफी चीजें सीखी थी. तो थैंक यू फॉर दैट एज वेल. सो ही इज अ वेरी काइंड ऑफ पर्सन. सो या, दैट स्टोरी काइंड ऑफ रिलेट्स कि व्हाई दीप वाज द go to person to call me in the show, right? So Just to add into that story, that when he called me, I got to know so much stuff about, there are so many common things we had, especially around Newtown. yeah. Definitely, I'll college उस पे नहीं आता, बट ठीक है, Hmm. कोई बात नहीं. Okay, so starting with the first question, I guess आप सबको brief तो पता ही होगा small cast का. 5 questions will keep things crisp, and obviously you can tell however you feel like. Okay, so first question, and I guess वो थोड़ा सा brief दे देगा who what Deep does, and वो क्या क्या करते हैं चीजें, right? So पहला question ये रहेगा, who is Deep, एंड वो जहाँ लाइफ में है वो किस वजह से. इट कैन बी अ पर्सन, इट कैन बी अ एक्सपीरियंस, इट कैन बी एनीथिंग. Okay, so if I start, Deep is basically a random experimenter who goes around, does things, and basically, अगर मैं उसको summarize कर दूं, तो who fucks around and finds out. So इसी तरह के से I started my journey in a very weird way, where I started actually DJing from a software that I found in college, in a school library, और जिसकी वजह से now I'm a founder. I know this doesn't relate at all, but that's how thing was. Like, using virtual DJ, shout out to virtual DJ, कि उस एक एप्लीकेशन को यूज करना सीखने के वजह से आई गॉट दैट कॉन्फिडेंस कि आई कैन एक्चुअली लर्न स्टफ ऑनलाइन एंड डू समथिंग फॉर माई सेल्फ. सो फ्रॉम वहां से मैं डेवलप किया एंड देन स्टोरी स्टोरी आई गॉट इनटू सोशल मीडिया मार्केटिंग 2022 में, नॉट 2022, 2020 में. जब पूरा लॉकडाउन था एंड आई वाज प्रीटी मच इंस्टाग्राम एडिक्टेड एंड आई हैड टू से समथिंग घर पे कि व्हाई आई एम ऑन इंस्टाग्राम, सो लेट्स स्टार्ट एन इंटर्नशिप ऑन सोशल मीडिया मार्केटिंग. एक एक्सक्यूज मिल गया कि एटलीस्ट मैं इंस्टाग्राम आराम से चला सकता हूँ. तो 8 घंटे के स्क्रीन टाइम और बहुत सारा पोस्ट बनाने के बाद आई गॉट एन इंटर्नशिप फ्रॉम अ कंपनी नेम डैम फिट. So they were a fitness company, so they trained me, interned me. उसी के अंडर में from intern, then I went to the social media manager of that page. From there, we started discussing about ads and how they are running, especially on Instagram and Facebook. धीरे धीरे मैंने स्पेशलाइजेशन किया उस पे, फेसबुक एड्स पे. एंड फ्रॉम देन वर्किंग एज अ फ्रीलांस इस पूरे सेक्टर में फॉर फेसबुक एड्स एंड जनरेटिंग tons of revenue, or you can say ROAS. Like, there was a campaign where we have a CTR of 7. So That's crazy. generating ads, yeah, I know. In fact, we were shocked, like how the hell did it happen? Then we realized there are some things that we just can't predict. So yeah, we And just did a lot of research what ads were working, and then we just copied it and then made sure whatever template we have made out of it, we added and multiplied it accordingly. And you were asking something. that's crazy, and I would love to know that what DJ वाला story can, how that relates to being a founder. थोड़ा बहुत, थोड़ा थोड़ा और elaborate करो कि कैसे you went from DJing to being a founder. Okay, so I did mashups. अभी जब मैं वो initial mashup सुनता हूँ, तो आई एम इतना सा distance away from bleeding from my ears. Those were piece of shit, literal crap, and my friends used to listen to it. थैंक यू टू ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स जिन्होंने भी वो सुना था, जिन्होंने भी वो टॉर्चर सहा था मेरे लिए.
they used to listen to it and say it's nice. And the thing is, every time, they say it was nice. तो थैंक यू अगेन जिन्होंने भी सुना था, इससे मेरा ग्रोथ होती है ना, आई कैन डू समथिंग. तो मैं धीरे धीरे दिस डीजे कार्लो अटेंडेड हूँ, 3 time वर्ल्ड चैंपियनशिप रेड बुल डीजेइंग में. So, I used to follow him a lot. So I used to listen how he's making, then I used to make. Then there was this one day I copied his entire mashup. He used to do on sets. मेरे पास तो सेट था नहीं, तो मैं वर्चुअल डीजे का सॉफ्टवेयर पे प्रैक्टिस कर करके सीखा था. तो मैंने क्या किया, वो पूरा कॉपी कर दिया. उसने सेट पे किया, मैंने सॉफ्टवेयर पे ही पूरा कॉपी कर दिया, विदाउट हार्डवेयर एंड इंटीग्रेशन. तो मैंने पोस्ट किया और वो फिर आके मेरे पोस्ट पे कमेंट किया, इट्स एक्चुअली वेरी गुड. ठीक है, मेरा तो दिन बन गया कि ओके, मेरे मास्टर ने मुझे ये कर दिया, मैं नाचता रहा. फिर आई स्लोली स्टार्टेड टॉकिंग टू, स्टार्टेड डीएमिंग रैंडम पीपल इंस्टाग्राम पे. 2020 कुछ तो करना पड़ेगा, सारा दिन कितना ही इंस्टाग्राम चलाऊंगा, 8 8 घंटे का स्क्रीन टाइम है, कुछ तो चाहिए उसमें. तो मैंने इसको रॉब को मैसेज कर दिया, रॉब. ओके, नाइस. ठीक है, मैड, from Mad, so that guy. So I started DMing him, and he replied. So I even remember that guy, and he had uploaded a post about food, and he was making samosas घर पे. So in अच्छा, back in 2021, सबने तो बनाया. मैंने बोला कि मैं भाई, आज से मेरा डाइटिंग शुरू था और मैंने पहले दिन ये देखा. तो ही लाइक, हाँ कैसा रहा डाइटिंग आज का दिन. देन थोड़ा बहुत कन्वर्सेशन हुआ, देन मैंने कार्लोस के साथ भी बात किया. इन द मीन टाइम आई वाज आल्सो वर्किंग इन डैम पिट, जहाँ से मेरा पूरा बेस बन गया, लाइक दैट पुश्ड मी इनटू सोशल मीडिया एंड ऑल. ऑल्सो क्योंकि मैं अपने ही इंस्टाग्राम अकाउंट पे बहुत ही सड़क छाप मैशअप्स अपलोड कर रहा था. एंड आई सॉ बर्स्ट, लाइक देयर वाज अ मंथ वेयर in my Instagram account profile visits, I had 2,500 profile visits with only 100 followers, जो भी मेरे दोस्त थे. And दैट्स then again there was this month जहाँ मेरा engagement था 25,000 with just 250 followers. तो that's how I learned and got the hang of it. एक बार मुझे algorithm समझने लगा, तो मैंने वो implement किया damn it, and then that's how the base started. that's crazy, dude. And I guess पता है, once you start doing things on your own ना, वो जुड़ा वाला थिंग ना बहुत सी चीज आपको सिखाता है. एंड बहुत कम चीजों में यू स्टार्ट डूइंग थिंग्स, एंड वो आपका ना पावर बन जाता है, जो बड़े कॉर्पोरेशन जो बिग स्केल में करता है वो नहीं मैच कर सकते, भले ही उनके पास टूल्स हो, टीम्स हो, रिसोर्सेज हो. बट वो जो एक होता है ना फितूर जो होता है, वो मैच नहीं कर सकते. सो दैट्स अ थिंग. एंड ओके, सो कमिंग टू द सेकंड क्वेश्चन, जो ना मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा है, नॉट फर्स्ट, जो फर्स्ट गेस्ट है उनसे ही पूछा है, बहुत सारे लोगों से पूछा, बहुत इंटरेस्टिंग जवाब मिलते हैं मेरे को. आई वुड लव टू नो कि क्या होगा आपका जवाब. Okay, so let's say you're given an opportunity to give a TED talk. Okay, TED talk in general, right? So what topic would you speak on and why? There are 2 to 3 topics I'll touch थोड़ा थोड़ा करके. पहला तो is fuck around and find out. Mm-hmm. ठीक है, like I have been doing from when I was 15 or 14, fuck around and find out. So the thing, उसके अलावा मैं बोलूंगा कि once you are started doing moving into one field, find similar minded people, बहुत हेल्प होगा. सो प्लस थर्ड को मैं इस पे एक एक करके एक्सपैंड करूंगा, मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैं पहले बता दिया कौन कौन सा है. एंड द थर्ड पॉइंट इज हैव अ थर्ड डोर. Why I'm saying this is because recently I've been reading this book, The Third Door, Mm-hmm. and it just opened so many perspectives, like even for a growth as such. For instance, मेरा initial बहुत सारे clients आ गए थे from that community which we are talking about. Mm-hmm. So having a third door, like इस book के perspective से अगर मैं बोलूँ, third door is if you consider success as a nightclub, then there is basically 3 gates. Number one is जो basic main line है जहाँ से सब लोग घुस रहे हैं, and it's so long, where एक success achieve करने के लिए you have to wait for 30, 40, 50 years and everyone is in line. The second is the VIP entrance, Mm-hmm. जहाँ पे there are people already successful, they are easily coming in and out of the nightclub. थर्ड इज हम जैसे लोग जो बालकनी से कूद के घुस जाते हैं, या अचानक से किसी का पास लेके घुस जाते हैं, या
find an intelligent way कि हम बता के कि अभी we are working with inside the club and just pretend कि like we are part of the club and then just move in somehow like that. Mhm. So this is the third story and third point. So coming back to the main thing that जो मैं बोला fuck around and find out is everyone is different. Mhm. सबके skills अलग हैं. कुछ बेसिक चीज के अलावा everyone needs to know what their actual skill is. जैसे मैंने जब मुझे लगा कि आई एम गुड इन मार्केटिंग इनिशियली देन आई रियलाइज ना मैं मार्केटिंग में अच्छा नहीं हूँ. व्हाट आई एम गुड इन इज टॉकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग पीपल. मतलब अब इससे मुझे क्या पता चला कि ओके अगर मैं इसको थोड़ा और पॉलिश करूँ आई कैन बी बेटर एट कॉपी राइटिंग हल्का फुल्का. आई कैन बी बेटर एट यू नो अंडरस्टैंडिंग पेन पॉइंट्स निकालने में बेटर है. एक और की स्किल जो मैं लेटर रियलाइज किया कि सिंस आई एम गुड इन अंडरस्टैंडिंग पीपल इज अंडरस्टैंडिंग द आइडियल कस्टमर पर्सोना पर बंदे का. Mhm. ठीक है. तो इस तरीके से जब जैसे ही मैं वो आइडियल कस्टमर पर्सोना लेके अपने मार्केटिंग कैंपेन्स पे डाल दे रहा था देयर टू स्काई रॉकेट. So even when you understand what you're doing good at it, you have to dig deep and find कि उस पे भी what are the things that you can tweak, understand, move along with it. True. So so So, ये गया part one. hmm. Go ahead. You are asking something. So मतलब पता है आई गेस you what you're talking ना मतलब वो वाला आई गेस मार्केटिंग whatever I have learned जो मार्केटिंग होता है ना इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग कि कस्टमर की साइकोलॉजी क्या है. फिर आप डिफरेंट टूल यूज कर सकते हो. आप सोशल मीडिया हो सकता है एड्स हो सकता है एनी टूल. बट इफ यू अंडरस्टैंड कि उसका क्या साइकोलॉजी है you can use different tools to target thing and I guess that's your case and that really helps and I was reading this book. मेरे को पता नहीं था deep that you are into books and all. So, but yeah, kudos to us. So I was reading this Okay, book by just on a Seth side Godin. note, I have this whole shelf dedicated to, I don't know, I think there are 35 books right now. Crazy. I One also have shelf a shelf. there, one shelf there. That's nice. मेरे को ना एक सवाल मिल गया. I'll ask later. ठीक है. So I was reading this book by Seth Godin and he says like I guess बहुत बड़े वो marketer हैं and he says कि most of the things which you are doing now won't be relevant what you are doing 1 week or 2 weeks after. बट जो फंडामेंटल पिलर्स होते हैं जस्ट लाइक कस्टमर साइकोलॉजी कस्टमर पेन पॉइंट्स ये सबको अगर आप अंडरस्टैंड करते हो ना यू विल बी ऑलवेज बी रेलिवेंट. चाहे कितना ही एआई आ जाए या कितनी चीजें आ जाए. once you understand this na nobody can remove you from the business. So I काफी relatable था वो point. So I completely agree with you. So जल्दी So, ही हम दीप को टेक टॉक मिले यही प्रार्थना करते हैं. uh, if I get a TED talk, it will be a collaboration of Deep Swears. Title will be the TED Talks Deep Swears. Why? क्योंकि it will be just cuss words filled in between random things, just to emphasize. Just like Gary And Vee? by the way, not exactly. One of my favorite books is The Subtle Art of Not Giving a Fuck. So मेरा पूरा लैंग मतलब that was my first ever book I read. तो मेरा Mhm. लैंग्वेज ही बेस हो गया वो. So even if I'm trying to explain something, people don't understand initially अगर मैं technical examples दूं. But Mhm. again, if I give them a very वाहियात example, they'll start laughing at it, but it'll take them 2 seconds to understand. Hmm. Works good for That's you. that's crazy. And मेरे क्वेश्चन ले लिया आपने बोल के बट ठीक है कोई बात नहीं. हाँ बट यू नो व्हाट ये जो स्किल है ना बहुत कम लोगों के पास होती है. And जब मैं भी कॉलेज में आता था ना मेरे को भी ऐसा लगता था कि यार कोई प्रैक्टिकल्स बताओ समझ में आए क्या मतलब है पुरानी जमाने की बात से एग्जाम्पल समझाने. सो यू हैव अ सुपर पावर मैन. And okay, coming to the third question, what is the current book which you are reading? I know Third Door, but apart from that Third Door, if I ask you तीन books के बारे में बताने which every every Gen Z should read. So yeah, first is Think and Grow Rich. I Think love and that book. grow Third Door, okay. the third or one more. If I just get up, this Uh-huh. will be the book. Okay. So if you are a college student, Mm-hmm. or if you want to understand how to talk to people, or if you want to understand in general how to explore the initial phases of your एक मेरे को professional गैस करने career, दो मेरे को गैस करने दो. अरे यार मेरे को गैस करना. नहीं मैं गलत गैस करता ही नहीं कि डोंट सेट अप टेल मी Don't Shut मतलब. Up by Prakhar Gupta, and ओके. I'm adding it to my list. ये मैंने मेरे को लगा ना definitely. what you will suggest is how to win friends and influence people.
because that's also a good book for communication. नहीं, like beginners के लिए. Why I'm saying this book is now, this is again, this is written from the male perspective. If I Hmm. talk about this book has two sections. Okay, एक हो गया स्टूडेंटहुड टू अडल्टहुड, जहाँ पे इट विल गाइड यू एज इफ अ एल्डर ब्रदर इज टॉकिंग टू यू, ठीक है, टू अ यंगर ब्रदर, और पूरा एक्सप्लेन कर रहा है. इट्स लाइक कैसे बात करना है लोगों से, कैसे नो बोलना है, जो कि वेरी, आई बिलीव मी, whoever is there, saying no is one of the toughest things taught in India, but it True. is very important. Then how to, have disagreements with your parents in a professional way, matlab they will actually understand what you're trying to say. Hmm. India mein this is a taboo, but this book evens out the thing. Matlab you can actually say no to your dad, Hmm. but he will respect you for that. मेरे ये को ये बुक इम्पॉसिबल नहीं है, चाहिए ये डिस्कस पॉसिबल के है. लिए. ठीक है, मुझे भी लगा ये पॉसिबल नहीं है, बट हाँ, इट्स पॉसिबल. ठीक है. प्लस this book also has, dozens of chapters dedicated to dating also. Okay. Matlab, not those cliche everything just speak like, a Hmm. problem with a lot of guys I have seen is, they don't know understand how to talk in general. Hmm. And now ये बंदा प्रखर भाई, if you are seeing this podcast, hats off, thank you, I have learned a lot from you. But if you are actually, reading this book, you'll understand that every chapter is almost like he's putting himself in a situation which is very relatable to us as Indians. Hmm. Then he is conversing the entire thing. तो मुझे पता है कि क्या करना है, उस पर्सपेक्टिव से दिस इज वेरी गुड. ऑल्सो देर इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द बुक, ग्रोन अप जोन, यंग प्रोफेशनल्स, दिस इज द गोल्ड माइन. यहाँ पे एवरीथिंग लाइक हाउ टू, talk to, how to present, how to talk to your seniors, how to talk to other department, everything clearly लिखा हुआ है. So amazing book. I had no idea about this book, but I'll surely read this out. Add it to my list. Feels like amazing. मेरे को लगता है ना ये बुक बहुत ज्यादा उसके तरह. I don't know if I've heard it या read it. How to like it's like Almanac of Navalavikant. वो भी काफी Yeah, I have that. फंडामेंटल अच्छा है ना. एंड इट कवर्स ऑलमोस्ट लाइक वेल्थ करते हैं, हेल्थ करते हैं, राइट. सो आई गेस दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ ऑलराउंडर बुक जहाँ पे वो टोटली कवर करते हैं कि हाउ अ पर्सन शुड live life. But yeah, that I guess it had more actionable points. Reading that to adding that to my list. So I love that. मेरे को ना Also would love book to lovers know बहुत. some books that you are reading right now. So अभी the main reason I started this podcast was like $1 million weekend. Bro, it's amazing. जितने बुक पढ़ लो इस बुक से जो फैट लगती है ना 2 दिन में, it's fucking amazing. It's crazy. So अच्छा, बुक this में is है the only. क्या? Huh? बुक में है क्या, लाइक ऐसा? It explains the psychology of how basically millionaires work, self-made millionaires work. And वो इतने अच्छे से ब्रेक डाउन करते हैं कि आपको समझ में आता है कि आप हर एक एक्शन जो लेते हो, राइट, एवरी फ्रीकिंग एक्शन, जस्ट ब्रशिंग 2 days 2 times a day, बहुत छोटा चीज है यार, लगे क्या है ये, कुछ नहीं फर्क पड़ता, राइट. बट यू आर कॉन्शियसली मेकिंग अ चॉइस टुवर्ड्स योर हेल्थ. सो ये सब जो छोटी छोटी चीजें हैं बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करता है. एंड स्पेशली अ प्रोक्रास्टिनेटर माइट लाइक मी जो ना ऐसे लेजी रहता है, चीजें रहता है, इट्स फेनोमेनल. सो आई लव दैट बुक एंड आई गेस एवरीवन शुड रीड इट. बहुत बहुत इजी रीड एंड बहुत प्यारी सी बुक. सो रीड करना, दैट अच्छा. वुड बी क्रेजी. And like recent a book that you loved recently. I'm asking these because I am also a book lover. So हाँ, in अभी मेरे पास it एक बुक just है नहीं, बट इट सीम्स क्रेजी. अभी जस्ट पढ़नी शुरू की है. इट्स लाइक सेल लाइक क्रेजी. देयर इज अ पर्सन जो लाइक ऑस्ट्रेलियन एजेंसी ओनर. ही हैज सोल्ड लाइक बिलियंस इन प्रोडक्ट एंड सेल्स. एंड ये काफी मार्केटिंग से रिलेटेड बुक है एंड काफी उसमें प्रैक्टिसेबल टिप्स एंड ट्रिक्स है, राइट. सो आई एम लविंग दैट बुक. सो वो पढ़ रहा हूँ. एंड ये एक है जो अभी जस्ट शुरू की है. इट्स लाइक व्हाई हैज नोबडी टोल्ड मी दिस बिफोर. ये काफी ओवरऑल बुक है, नॉट रिलेटेड टू बिजनेस एंड वैसे वाला, बट या इट्स क्रेजी. सो बट सेल लाइक क्रेजी, यू शुड रीड इट मैन, इट्स अमेजिंग. मतलब अभी पढ़ के ही मेरे को ना ऐसे लाइक लगता है कि हाँ भाई कितना क्रेजी साइकोलॉजी है. सो या. okay. I'm noting it down. Sell like crazy. Done. या. सो Added. दैट्स क्रेजी. एंड आई लव, पता है जो लोग बुक लवर्स होते हैं. सो ओके, दैट्स क्रेजी. अब थोड़ा सा टर्न करते कन्वर्सेशन को. सो कमिंग टू द फोर्थ क्वेश्चन, दीप.
I was also researching about you on LinkedIn, Twitter, like all भी overall देख रहा था आपका profile. So you seem to be starting this thing called Vitamin G. So just tell me कि what you're doing, and one question जो मेरे को लगता है कि कोई भी कुछ start कर होता है ना, if you're okay answering कि what makes you different? Okay. So yeah, थोड़ा सा Sure, yeah sure. whatever yeah go ahead. So So when I was working in different in freelance or अलग-अलग companies में, mm-hmm, I came to know there are certain pain points in every type of marketing involved, right? mm-hmm, मतलब हर तरह का लोगों को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आते रहता है. So then I started, you know, making points, pain point, the thing I'm good at. तो मैं mm-hmm, वो नोट डाउन करने लगा. Then I needed a validation कि जो मैंने बनाया है, जो पेन पॉइंट्स है, is it even worth it? क्योंकि we have to have market research. mm-hmm, तब मैंने वो ग्रुप्स में रैंडम लोगों से बात किया. I started working with 2 to 3 drop shipping companies. mm-hmm, Um, but just unrelated to the topic, FII, all the freelancers out here, if you're working with any company, make sure you take an advance or you will have a lot of problems growing. So make sure you have an advance paycheck ready or don't work. Coming back to the topic, while working with dropshippers, there are a lot of experiences I had. So उसपे the thing I understood is एक प्रोडक्ट को जब हम लोग रन कर रहे थे तो वहां पे मिनिमम एक बंदे को 2 बार ऐड दिखेगा, तभी हाई चांसेस है वो बिकेगा. ठीक है. mm-hmm, ऑल्सो वी ऑल नोटिस दैट जहां जरूरी नहीं है कि अगर सीटीआर हाई हो तभी जाके उसका सेल्स हाई होगा. मेरा एक कैंपेन था जिसमें सीटीआर इज 4, सेल्स 0. ठीक है. mm-hmm, तो बट अगेन लिंक क्लिक्स बहुत थे. वेबसाइट पे गया, वहां पे ऐड टू कार्ड्स हो रहे थे बट सेल्स नहीं हो रहा था. mm-hmm, There's some mishap. So what we did was then I made an entire framework कि if these are the things that are happening, मतलब we can conclude this. अगर वेबसाइट पे ये कस्टम मेट्रिक, we made custom metrics for everything. So अगर ये mm-hmm. कस्टम मेट्रिक फुलफिल हो रहा है मतलब इसका कंक्लूजन ये है. We had a then I made a list out of it. Then I had a conversation with one of my co-founders right now, whose name is Fazil. Shout out to Fazil if you are listening to this. So then I asked him about what he was previously doing, and he told me his entire entrepreneurship journey and of how he got this funding when he was in college. He had this startup, took it to 2 crore plus, and then it was then later on acquired everything. That his entire story. Then as a founder, then I had a conversation like in the marketing domain. What are the things that you faced? So जो pain points मैंने तभी बनाए थे, it actually reflected to the pain points with him. Plus, then again, I contacted 2 to 3 different founders, be it Rahul or be it Muktadir. There are so many people. So everyone had the same thing, like 2 to 3 points common हो गए. तो मैंने क्या किया उसका एक लिस्ट बना के then we came up with a different framework altogether कि what if we could have the feeling of one across platforms. मतलब for instance Jivangshu, imagine I am taking over the marketing of a particular brand. Okay. For Mm-hmm. instance, Gen X 24, that's I think Mhm, mhm, your brand name. So Gen X mhm, 24 का अगर हम लोग marketing campaign ले, what we'll be doing is creating an ideal customer persona. एक तो mhm, definitely वो required है, बनाए हम लोग. Then we'll be making content that is platform specific. मतलब LinkedIn पे कुछ और तरह का चलता है, Insta पे कुछ और चलेगा, YouTube पे कुछ और चलेगा. And then mhm, we'll make sure they have interconnection. मतलब something that they saw in LinkedIn will be connected to something that is they saw in Instagram, will be connected to something that they will be receiving an email for. So mhm. what happens is within a very short period of time, we are creating 7 or more different touch points for the user, right? अगर मैं very short period of time में multiple touch points create कर दूं, building trust and building faith for the product or service, whatever we are working for, the number of so at the end the actual customer acquisition cost for that company will drop down significantly. True. Now if pairing it with paid media and then retargeting, then entire chunks of different algorithms put together, there was this company जिसका हम लोग customer acquisition cost per lead, initially it was 87 rupees, we brought it down to 21. Then again it was further pushed to 13 rupees. That's So crazy. yeah, I know, right? In fact, we didn't expect this much of a difference initially. Once we had experimented,
We got the proof, and that's separates vitamin G completely from other people. So Hmm. with time, we understood that this is the only thing we have to do. We also have to do a lot of more stuff. So now what we are doing is we are working with startups. We are helping them develop a GTM. Once we get hold of the GTM, from generating the GTM to executing it, we help Hmm. them across everything. Hmm. So Vitamin G is basically a growth studio for startups who want an omni-channel approach to, at the end of the day, so that their customer acquisition is brought to a lower number and the net ROI is high on their total campaign. डेफिनेटली सो आपने ना वो सारे स्टार्टअप ओनर्स की वो नस पकड़ ली है कि सबको चाहिए होता है कि यार मेरे को ना कम से कम में अपनी चीजों को ज्यादा से ऑडियंस तक पहुंचाना है एंड राइट ऑडियंस राइट एंड वो पकड़ लिया आपने नस एंड आई गेस यू गाइस आर डूइंग वेल एंड यू विल डू वेल सो आई एक्चुअली Thank हैव सम you. ऑफ my like connections है जो would love to get this omnipresent. I'll refer I'll get your number to them as well. So that's nice, and I love that approach. You are focusing on कि how you can help them fundamentally rather than just getting them कि यार बस एक बार मिल गया. Like most of the agency and things I've worked with, खुद मैंने भी गलती की है. I realize that I accept that कि यार बस फटाफट से कर दिया इस महीने सेल आ गई इतनी भाई खुश. But you have to build that brand entire ecosystem कि भाई वो वापस से खरीदे एक बार खरीद लिया तो क्या हुआ उसको वापस रीपरचेज कराओ उसको रेफरल्स करवाओ या चीजें करवा रही. So that approach is really amazing, and kudos to you and the team at Vitamin C. Okay, so So thank you initially for that, lovely thing that you're referring some people. We will love to work with them. And first of all, whatever we are doing, kudos to the team, man. Like I couldn't be doing this if we didn't have that wonderful team with us working. There is a day when one of my teammates, Rohit, called me up at 2 a.m. to say, bro, the campaign which we were doing out of nowhere was blocked for no mhm, reason because it was new type we were trying to do. So mhm, Facebook just blocked out of nowhere. So he sat up that from 2 a.m. in the morning to 5 a.m. to mhm. completely clear everything, get the account out of the ban zone, and then work again. So he didn't even sleep that night, completed the entire thing. So yeah, I'm really lucky to have this hard working team with me. That's nice. So Abhi, if you're okay telling how many people are there in your team? We have a team dedicated for Google Ads. We have a team dedicated for Meta, Mhm, Meta related everything. I'm the one who guides everyone because mhm. I have been doing this to overcome my addiction or to just label it like that. Captain of the So, ship. met, captain of addictions. So coming back to Yeah. coming back to the thing. So we have one team from Google, one team for Meta. We have one Acha. dedicated team for email marketing and content writing, and we have Mhm. one separate dedicated team for lead generation for us. And this goes for the B2C part. We also have a PLG and SDR services for B2B companies trying to develop, generate leads, and go for business growth. Right. तो यार बड़ी टीम है And we काफी फिर तो. also, actually, it's like connects and connects. That's how it built. And Mhm, then since my co-founder has already raised rounds and has a lot of influence, you can say. So mhm, if required, we also help startups to get a lot of funding. Definitely there are some background checks, then entire process comes. Given that, if that is completely clear, we help them get the startup, develop the GTM, push them into the market. And again, business consultancy also we are doing there. That's nice. बस सबके काम ले लो. नहीं नहीं मजाक कर. You name it, we have it. आई गेस इसमें ना किसी को कोई काम नहीं जाता है इतनी बड़ी मार्केट है एवरीबडी फिट्स इन द मार्केट तो कोई किसी का काम नहीं लेता है रियलाइज दैट एंड मैं तो ज्यादातर मार्केटर से ही कनेक्ट करता हूँ बिकॉज हो जाता है आई डोंट फील लाइक कि आप किसी का काम लेते इफ यू डिजर्व इट यू आर गोइंग टू गेट दैट वर्क तो आई एग्री टू दैट. Exactly. In fact, there is so much work and there are so many people, and you can't just have one entity can't exist. There has to be multiple entities. अग्रीड अग्रीड. Though we are the ओके. best, but huh. Okay, guys, check out Deep's LinkedIn page या फिर website. I'll tag it there. तो if you want to connect with him, go ahead and special So, discount दे देंगे आपको ठीक है चलो. Okay, yeah. Coming to the fifth question, Deep.
which is the last question which I would love to ask you, and थोड़ा सा वो आपका personal आपको explore करेगा. So, how many years, like कितने साल के हो? If you're okay telling. Just 16. Yeah, I'm no, not 16. I hope. जो मुझे अभी पता है 16 पे पता होता तो it would have been हाँ हाँ. easier. But yeah, I'm currently 22 years old. That's crazy. So, जो 22 years में इतनी सारी experience है, इतनी सारी चीजें सीखे, what has been your biggest regret? And अगर वो वापस से आपको नहीं करनी होती, मतलब if you are starting again, तो what would you haven't done? नहीं की होती, rather than what you would have done. नहीं की होती. Your biggest regret है क्या? Mm, okay, I had thought many times what would I have, क्या मैं किया होता, but क्या Mhm. नहीं किया होता. This is a new question for me. Uh, I would have not wasted a lot of time thinking whether I cannot do it. मतलब self doubt number one and overthinking. Hmm. So anyone starting, I'll say कि what's there to lose? Do it anyways. You already don't have anything. I'm So, not, saying anything against anyone. mhm. If you don't have anything right now, so if someone says no to you, you are in your normal condition. कुछ जा नहीं रहा और लेकिन अगर उसने हाँ बोल दिया, you're getting more. So there's so much to gain, nothing to lose. Then why stop? अग्रीड. सो वही ना प्रोक्रेस्टिनेशन वाला, एंड थोड़ी सी चीज पे स्टार्ट कर देने का. आई गेस आपकी भी जर्नी ऐसी रही होगी दीप, दैट वन अभी तो यू हैव लॉट ऑफ एक्सपीरियंस विद स्टफ. जब आपने फेसबुक ऐड भी शुरू किया होगा, तो जब फर्स्ट क्लाइंट पहले मेरे को बताना, व्हाट वाज द पे यू गॉट फॉर द फर्स्ट क्लाइंट, इफ यू ओके टेलिंग, ठीक है. सो जो फर्स्ट क्लाइंट होता है उसे बहुत Yeah. इशू होता है, थोड़ी सी चीजें सीखी होती है बट वो प्रैक्टिकली तक बहुत इशू आता है. सो वो होता है, बट इट्स ऑल अबाउट डूइंग इट. या सो या व्हाट वाज द थिंग फर्स्ट पे, एकदम फर्स्ट में इंटर्नशिप My भी हो सकती है. first, yeah, my first pay was 500 rupees. Okay. Okay, 500 So, month. and it was, 500 yeah, month. for that month. Yes. Okay. So, and it was hilarious because my net income was 500. I treated myself for 700. Net minus 200. So, yeah, it was funny. But again, it was like I did something, I got out of it. Mhm. And, it was a very good feeling of, getting something out of doing and learning the entire thing online without any professional quote unquote help. Okay. That's crazy, and वो होता है. I relate to that. मैंने भी ना वो स्टारबक्स की कॉफी खरीदी थी जाके. Anyways, ऐसा कुछ था नहीं उससे, but that experience and stuff. So I also did that. हाँ, तो really learned a lot of things deep, and I guess हमारे audience को भी जो बहुत छोटी सी है, but ठीक है, कोई बात नहीं. It's all about putting in, as you said, खोने को क्या ही है, right? So yeah, with the parting notes, Deep, do you want to add up something? It can be anything. So yeah, last thing, and we'll conclude with that. okay, so I first of all to all the viewers of your show, you guys please subscribe to his channel and follow him across all media because Jivangshu, as I know, like he's one of the very hardworking guys out here, and he has tons of things to share. I think more episodes to come in this podcast. Also, for all the D2C founders out there who are trying to run Facebook ads, I have created a special you can say a framework and all Mhm. the custom metrics that I had learned initially running campaigns that gave me above 4x ROAS and developing CTR of above 7. I have made a small PDF out of it, which I will Mhm. be sharing it to Jivangshu and he can add that in the description. You just Sure, need to sure. go through it. All the custom metrics that I have found, it will be available in that PDF. Also, all my social handles will also be there. If you want to follow me, would love to connect with Vitamin C. That's crazy. Okay, definitely. वो तो कर देंगे. So this was the first episode. We explored, the professional side of Deep and stuff. But अगर hopefully let's see things go and वापस से line होती है, तो हम second episode करेंगे Deep के साथ. उसमें बहुत सारे personal questions होंगे, because I feel like he has a lot of personal stories to tell related to relationship stuff. मेरे को काफी ऐसा लगता है ना, Deep is very experienced with dating and stuff. ठीक है, तो उसमें जाएंगे, थोड़े से और डीप लेयर्स में जाएंगे दीप के, एंड Then एक्सप्लोर this करेंगे stuff. podcast will not be of a business quality. तो वो अलग ही चला जाएगा, अलग ही डायरेक्शन पे चला जाएगा.
चलता है हमें चलता है, हमें व्यूज चाहिए. So that was the thing. Thank you, Deep, for coming. And really means a lot कि आपने अपना time निकाला and आया. आप आए हो शो में. And all the best for your vitamin G. And I really believe, and I really believe in you and your work which you're doing. I'm not saying it for just for the show. I have seen your content and जितने PDFs. And मैंने लोगों से बात करी because the biggest thing जो आपको insights दे सकती बाकी लोग which people have told about you. एक तो community से offline में भी एक जन ने कहा था, I won't name that person, but yeah, let things, but yeah, I have got insight. So yeah, kudos to you and the work you're doing. All the best, Deep, and Thank you. Thank you. चलो guys, bye bye, have a good day, and thank you for coming and subscribe कर देना. चलो bye. Thank you. Thank you.